Hello bachcho, now let's discuss the question. The question says a bar magnet makes 40 oscillations per minute in an oscillation magnetometer. An identical magnet is demagnetized completely and is placed over the magnet in the magnetometer. Find the time taken for 40 oscillations by this combination. Neglect any induced magnetism. Now, before starting the solution of this question, let's write down the key concept. Here, key concept is time period of a magnet in magnetic external magnetic field, and it is equal to T equal to 2 pi under root I divided by MB, where I is magnetic, it is moment of inertia. This is magnetic moment, and it is external magnetic field. Now, to discuss the solution of this question, I will use this key concept. तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं हम. एक मैग्नेट है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक में रखी हुई है. बेसिकली ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है और उसमें ये जो हमको बार मैग्नेट दी हुई है ये ऑसिलेट करती है और इसका हमको दिया हुआ है 40 oscillations पर मिनट. तो इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 1/40. लेट्स सपोज इट इज t1. ओके, this is 1/40 minute. Time period is in the minute. Okay, now what happen if I take another bar magnet and it is demagnetized. What does it mean? अगर ये demagnetize एक बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा. ओके, और उसके बाद क्या किया गया, इस डीमैग्नेटाइज मैग्नेट को इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया गया और फिर इसका ऑसिलेशन हमको फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस केस में अगर हम देखें T2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई, it is, let's suppose I2, let's suppose this is M2 and this is B. यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो ये I2 है, this is what magnetic moment that becomes twice of I1. क्योंकि जब सिंगल मैग्नेट था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट I1 था. ओके, और फिर इस मैग्नेट के ऊपर इसके ही जैसा एक आइडेंटिकल मैग्नेट रख दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वन. नाउ व्हाट अबाउट दिस M2? दिस M2 इज इक्वल टू M1. व्हाई? दैट इज बिकॉज क्योंकि हमने जो ये सेकंड बार मैग्नेट लिया है वो डीमैग्नेटाइज्ड है, इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. सो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक मोमेंट विल रिमेन द सेम. ओके, सो नाउ लेट्स पुट इनटू this equation, and what we know, T1 is 2 pi I1, that is M1 and B. Let's suppose this is 1 and this is 2. Okay, divide 1 by
equation 2. Divide equation first by 2. So we can say T1 upon T2, that is 2 pi under root I1 M1B divided by 2 pi I2 M2B. Now from here T1 upon T2, 2 pi will cancel out, this M2B cancel out, and we are left with I2 upon I1. Okay, now if we see it very carefully, then we can say basically it is I1 upon I2. Okay, and 2 I2 is what? Twice of I1. So we are just having 1 upon 2, and this is T1. T1 is 1 upon 40 and this is T2. तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी, that is this is T2 is equal to 0.0353 minute. Okay, now this is the time for one oscillation. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टाइम फॉर 40 oscillation. So what we will do, we will multiply this 0.0353 multiply by 40, and it comes out to be 1.41, which is basically under root 2. Okay, so this is in minute. So now go back to the question. So this is the answer of our question, and I hope you have understood it well, and best of luck.